स्ट्रीट फूड लाहौर। खाना सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है। और उन्होंने क्या उस खाने में स्ट्रीट फूड लाहौर की जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है लाहौर के खाने को, कमाल की वीडियो होगी इंशाल्लाह, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। और उस पर ढेर सारी डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें। चलो स्टार्ट द वीडियो। People in Lahore, they either eat, think about food or decide what they want to eat next. Let's discover the most iconic, delicious food places of this city that is more than 2,000 years old. I have some concerns, but hopefully my European stomach can handle all the spices and all the dust. Jina Lahore, Nyata Kiya, or Jamia, Aini. Lahore is the second largest city in Pakistan, with a population of over 13 million people. Its cuisine is generally spicy, oily, salty and sweet. The most famous dishes include nihari, slow-cooked stew with tender meat, lassi, refreshing yogurt-based drink, halwa puri, crispy bread with sweet and spicy filling, chicken karahi, marinated boneless chicken, and so much more. Today I will take you on a tour of the most iconic street food places. On this rainy day, nothing hits like a fresh lassi for breakfast. Jatt Lassi Wala is a famous shop located in Old Lahore since 1980. Referred as the best lassi in Punjab, this lassi shop opens its door at 5 AM and works till 10 AM. Lassi is a drink made out of fresh yogurt, milk, sugar and spices. Good morning. Egg lassi. शो के मतलब पैसे नहीं ले रहे, हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं और गुड हॉस्पिटैलिटी। This might have been one of the best lassis I have ever tried. It's really sweet, it's creamy, you've got a very tangy texture, and I'm so humbled that they just gave it to me as a gift. That's just lovely. Here's some Pakistani hospitality for you, right from the start of our episode. Welcome to Benazir Samosa, one of Lahore's oldest samosa shops. Here you can try fresh fried pastry with meat and potatoes, served with sweet and sour sauce. Heavenly taste. The dough is so crispy, the chutney is so sweet, it's soft, it's delicious, it's unforgettable. You are in Lahore, you don't try Benazir Samosa? I'm sorry, you're not in Lahore. What is the secret ingredient of Benazir Samosa? इसमें बहुत ज़्यादा मसाले बनते हैं, तकरीबन 10 to 12 मसाले, 6 धनिया पुदीना, 10 से 12 मसाले और फिर धनिया। Time for the main course. फिर जाकर If you live in central Lahore, it's unlikely you have never heard about this place, Bagas Biryani. My favorite, Almost in every office, one day a week, they say Bagas Biryani Day. Biryani is an intricate rice dish made with layers of curried meat and rice. It's served with raita, salad and tikki. Here, you might think to yourself, who are those two people? And those two people are the founders of Bagas Biryani, the two brothers. One of them is Bagas and another one is Bakar. Time for a tasting. $5 की प्लेट है। It has just the right amount of spice, but in my humble opinion, Bagas Biryani is not my favorite street food in Lahore. You can feed a family with the size of the portion. Coming up, dessert time. Kulfi is an ice cream made with slowly simmered milk with a delicious, nutty, caramelized flavor. I have been looking to find a taste of authentic Pakistani kulfi for a year, but only here and now
in Old Lahore, I'm finally ready to indulge in this deliciousness. The moment of truth, finally eating the kulfi. This is what I was looking for all these months and months of my life. The perfect flavor of kulfi. You can only find in Pakistan. This little boy offered me a bottle of lassi as a sign of kindness and hospitality. Also, what is it about strangers in Pakistan being so happy to finish your ice cream? Food in Pakistan, it's not just nutrition. Food in Pakistan is love language. And it's love language that goes both ways. From the one hand, people love to share food with you, and you should never be worried about being hungry in Pakistan. But if you refuse food, you will be asked a lot of times whether everything is alright with you. Are you sure you're not hungry? And don't worry, we left some snacks and food for you, just in case you get hungry at night. Kaka pan shop. Pan is a popular street food in Pakistan that consists of betel leaf wrapped around various fillings. It's commonly enjoyed as a mouth freshener and a digestive aid. If you have a lot of pan, you might develop an addiction which causes a gum disease that leads to excessive production of saliva that makes your mouth red. Pray for me because of Kaka Pan shop's hygiene. Pray for my stomach. I mean, I am praying for my health. Hair up, so the fire doesn't burn my hair. How am I supposed to eat this? They're traveling a bit as well. But this has been the problem. Because they don't play in home conditions, they tend to play in UAE a lot more. They haven't been able to play against the big Absolutely. It's really tasty. Really good. Like it out. Uncomfortable feel. Today we have discovered the flavors of Old Lahore, like fresh samosa, sweet kulfi, pan that makes you high, breakfast lassi, and iconic biryani. Which one would you like to try? Write in the comments. Hi, I am iryana, and if you like my Pakistan videos, please like, comment, share, and follow for more. Coming up, what $10 can get you in Pakistan? Trigger warning, I'm going to finally fix my teeth, but on the streets of Rawalpindi. Also, how cool is it to have mehendi done on your hands by a talented local artist? And why do people in Pakistan fry lizards on the street? Tune in on Thursday next week at 5 p.m. Pakistan time. पहले मैंने कभी लाहौर नहीं देखा था बाय द वीडियो इट्स अ फर्स्ट टाइम मे बी आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने लाहौर नहीं देखा होगा और अब वीडियो की तरफ आते हैं बात करते हैं लस्सी की जट लस्सी सिंस 1980 से है जट लस्सी ओल्ड लाहौर में और उनका जो बनाने का तरीक़ाकार है वो ताज़ा दही और ताज़ा दूध उसमें चीनी भी डालते हैं और ये था उनका जो गिलास है वो $0.70 का इरियाना ने बताया उसमें वीडियो में लिखा हुआ था पाकिस्तानी रुपीज़ आप बना लो जितने भी बनते हैं और ये उनका जो तरीक़ाकार है और उनकी जो शॉप का टाइम है वो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक उनकी शॉप खुली होती है यानी कि लस्सी जो होती है और लस्सी प्रीफर पंजाब में ज़्यादा की जाती है फॉर द ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए और दूसरी तरफ समोसे की बात करें और समोसा बेनज़ीर समोसा वो भी ओल्ड लाहौर में है काफ़ी पुरानी दुकान बताई है हरियाणा ने ये नहीं पता अब कितनी पुरानी है कभी लाहौर गए नहीं हैं लाहौर जाएंगे तो पता चल जाएगा कितनी पुरानी है और उनके जो इंग्रेडिएंट हैं जो उन्हें वो तैयार करते हैं जैसे उनका जो तरीक़ाकार है उन्होंने खुद भी दुकान वालों ने बताया वो जो भाई थे उसमें उन्होंने बताया कि बहुत से मिसालों से बनाते हैं वो 10 से 12 मिसाले डालते हैं फिर धनिया और पुदीना भी डालते हैं मिसाले तो आप लोगों को फिर पता होगा और उसमें जो छोले भी डालते हैं जब वो प्लेट देते हैं वो भी $20 की $0.20 की वो प्लेट देते हैं समोसों की
और उसमें छोले डालते हैं और चटनी डालते हैं, वो जो मीठी मीठी चटनी डालते हैं उसमें। अच्छा, दिल्ली निहारी, उसका भी इंग्रेडिएंट आप लोगों ने देख लिया था वीडियो में, वो भी ज़बरदस्त। फिर कुल्फ़ी, इस तरह की जो लाहौर के में ऐसे स्ट्रीट फूड इस वीडियो में दिखाया है। आई होप आप लोगों को वो पसंद आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये चीज़ करूँ तो अपनी वीडियो इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू सून विद न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।